Hello G, this is Ravi and this is log 2. I have lot to do today. Uh, I have work, so you will be seeing me working throughout the day as there is a release coming up. Let's see how it goes. So I work as a front-end engineer. I told you in my previous log. Currently the front end is not that what I used to do, or you can say we used to do now. The AI का जो अभी क्रेज चल रहा है ना, इसमें बहुत कुछ नेगेटिव भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है. बट positive for me currently is that I can show you the design, I can show you the code base. I use cursor for my day-to-day coding and Figma MCP server. So to putting more strain on Figma MCP server, what I actually want to talk that it's very easy to talk to cursor and Figma. And the design is that I just enable the cursor MCP. I gave the cursor a prompt एंड इसने अच्छी तरह से उस सेक्शन को पढ़ा. मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ अराउंड 100%, बट हाँ, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 60-70% तो है. कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में 60-70% एवरेज में बोल रहा हूँ. इट्स वर्किंग फाइन. इनोवेशन इज़ गोइंग अहेड. और मुझे लगता है दिस एम सी पी थिंग ऑफ फिग्मा is going to be more crazier coming months and years, I guess. Now I completed my to-do list, little bit of left, but I can assure that in coming years this MCP servers and things will and is going to be very smarter. It's not that far. वो दिन दूर नहीं जहाँ आप फिग्मा पे डिज़ाइन बनाओ और सीधे के सीधे वेबसाइट बना लो. इट्स वेरी creepy creepy वैसे. It is getting closer, I guess. And finally the day is ending. It's 6 and it really worked. The Figma design and the MCP, the combination is very good. What I'm seeing is marvelous. Though I can't show you as I told you already, but in coming months this is going to be more interesting yet dangerous for our front end engineers. कहाँ तक मैं ये अश्योरिटी से बोल सकता हूँ पता नहीं, बट इतना मुझे समझ में आ चुका है. 3 months and this MCP will be more far better. ओके, अब आते हैं बातों पे. थोड़ा सा अंधेरा होगा. got a new book and I ordered yesterday and it reached today, but मुझे पता नहीं क्यों आज खोलने का मन ही नहीं करा. ये किताब मुझे कई दिनों से पढ़ने की बहुत इच्छा थी, बट इसे मैंने सोचा कि खोलूँगा, बट उतना ख़ास मन नहीं करा. अब देखते हैं, कल अगर इसकी अनपैकिंग हुई तो फिर आपको बताएंगे कि कौन सी किताब है ये. So this is again the shortest blog for me. Thank you.